तो शिवा पूछ रहे वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने पैसे मिलते हैं? ये तो पर्सनल क्वेश्चन हो गया। अगेन अगेन ये भी डिफर करेगा आप कहाँ जहाँ रहते हैं। कैलिफोर्निया में ज्यादा मिलेगा अगर आप वीएपी पोजीशन में, बट एक और चीज है कि एक ही पोजीशन में सेम टाइम ज्वाइनिंग में भी अलग अलग पेमेंट करते हैं। तो अच्छा। मेरी ही पोजीशन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे पहले पोस्ट डॉक करी हुई है, तो उनको मुझसे हाँ। ज्यादा मिलता है अच्छा। और मुझे उनसे कम मिलता है। एंड लाइक आप कभी कभी ऐसा होता है नेगोशिएट कर सकते हो, कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आप बढ़ाएंगे, बट यूजुअली ये इंडस्ट्री में ज्यादा होता है, एकेडेमिया में बिकॉज इट्स वेरी प्रोफेशनल, पीपल आर वेरी हाँ। नाइस खुद से ही। तो नेगोशिएशन ऐसे कुछ करते नहीं है लोग। बट यस, तो ये डिफर करेगा अगेन कि अगर कोई फ्लोरिडा में है तो उसको कम मिलेगा, कैलिफोर्निया में ज्यादा मिलेगा। सो अगेन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू ऐसे प्लेस। एकेडमिक्स में लोग आते हैं इंटरेस्ट की वजह से, दे हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग रिसर्च एंड द मोर थिंग, नॉट द मनी इज नॉट द प्रायोरिटी इन एग्जैक्टली। एकेडमिक्स। ओके। ये समृद्धि पूछ रही है कि गुड आफ्टरनून मैम सर, हाउ टू अप्लाई फॉर पीएचडी आउटसाइड इंडिया? आई थिंक यू आंसर्ड वेल दिस क्वेश्चन, राइट? बहुत अच्छे से बता दिया। एंड लाइक व्हाट एग्जाम्स एंड एप्लीकेशंस आर नीडेड? तो आई थिंक दोबारा बताने की जरूरत है, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। मतलब I'll repeat once again. It's like you have to take GRE General, TOEFL exam, and GRE Subject exam, GRE General और TOEFL की एग्जाम की डेट लेना बहुत ही आसान है। बट GRE Subject एक साल में एक बार होता है इंडिया में, तो उसके लिए जल्दी से लाइक उसके लिए रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे। एंड अपार्ट देन दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सीवी, डाइवर्सिटी स्टेटमेंट। एंड आपको अपने जितने भी प्रोफेसर्स हैं, अकॉर्डिंग टू मी यू शुड आस्क देम 3 से 4 महीने पहले लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल होता है एकेडेमिया में टीचर्स, एंड दे डू नॉट एंटरटेन लास्ट मिनट रिक्वेस्ट। तो अगर आप उनसे बोल रहे हो कि सर मुझे कल अप्लाई करना है, सो दे विल बी लाइक आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज of course like if they are writing for you तो उनको भी पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा, they'll have to explain everything about you, that how are you as a student. Sometimes they might not want to write for you. So मेरे when I was at IIT Hyderabad, so me and my senior and my classmate, we were 3 people who were applying. तो मेरे और मेरे सीनियर्स की 2 यूनिवर्सिटीज सेम थी। तो वन ऑफ लाइक एंड ही वाज सीकिंग LOR फ्रॉम द सेम प्रोफेसर जिससे मैं सीख कर रही थी। तो वो प्रोफेसर ने मुझको बुलाया और उन्होंने मुझको क्लियरली अपनी बात रखी कि देखो कि अगर मैं 2 लोगों के लिए LOR लिख रहा हूँ और सेम यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी वापस प्रोफेसर के पास भेजती है, क्वेश्चन करती है कि रैंक करो इन दोनों स्टूडेंट से, और मैं रैंक करना नहीं चाहता। सो इसलिए लाइक यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस। अगर आपकी क्लास में 2 या 3 लोग अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, सो दिस इज समथिंग विच आई फाइंड वेरी वियर्ड अबाउट इंडिया। इंडिया में पीपल डू नॉट टेल यूजुअली कि हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, हम किस प्रोफेसर से LOR मांग रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो व्हेन यू कम टू यूएस नो यू रियलाइज कि ये सारी चीजें ना, like it's so stupid. You should not do all these things because it's neither good for you nor for the other student, because at the end of the day तुम्हारा भी एडमिशन नहीं होगा, सामने वाले का भी नहीं होगा। नहीं। हाँ। तो कंपटीशन होना चाहिए, बट हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक यू आर जेलस ऑफ समवन तो आप उसको बता नहीं रहे हो। सो आई फील कि अगर आपके बैच में और 3-4 लोग हैं एक्सप्लिसिटली बैठो and tell them, see, these are the universities I'm applying to, and please let me know what are the which are the like in which universities you are applying, so that कि जब आप LOR मांगे तो कोई प्रॉब्लम ना होए और आप अलग अलग प्रोफेसर से LOR मांग रहे हो, और प्रोफेसर्स के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है और ये आपके लिए भी प्रॉब्लम है अगर वो रैंक कर रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप प्रोफेसर्स को भी टाइम दो और आप अपने आसपास लोगों से भी बात करें कि जब आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड या दैट्स इट, लाइक यही चीजें कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ईमेल द प्रोफेसर्स यू वांट टू वर्क अंडर। या ओके, तो यहाँ एक तो प्रतीक्षा पूछ रही है कि हाउ इज पीएचडी वर्किंग कल्चर इन यूएसए एज कम्पेयर टू इंडिया? ओ अमेजिंग। सो
one of the things is you will actually you'll be able to figure out that if you really want to be in academia or not. Because if I know, like, one of my friends, you know, she's doing her PhD, like she did her PhD from IIT Hyderabad. Now she didn't teach for the entire 5 years, हाँ but I did teach. I हाँ taught for the entire 5 years, and during summers I was an instructor. So मैं like starting 3 साल मैं TA थी. Like there was a professor who was teaching and I was just a teaching assistant. जो जाके बच्चों के डाउट्स लेते हैं ऑल ऑफ दैट. बट टीए का काम भी बहुत ज्यादा होता है. डू नॉट टेक इट लाइटली कि अच्छा लाइक इंडिया में जाके बस क्लास में गए, डाउट्स नहीं है, वापस आ गए. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको 50 मिनट्स क्लास में रहना है तो रहना है. okay एंड आपको बच्चों के क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे, उनकी कॉपीज ग्रेड करनी पड़ेंगी. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. सो एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपको टीचिंग एक्चुअली पसंद है या नहीं. बिकॉज अगर आपको टीचिंग पसंद नहीं है तो आप फिर पीएचडी के बाद, लेकिन अगर आपको रिसर्च पसंद है तो आप कोई रिसर्च पोजीशन ढूंढोगे. और अगर आपको टीचिंग पोजीशन पसंद है तो लाइक अगर आपको टीचिंग ज्यादा पसंद आ रही है, रिसर्च नहीं आ रहा है, तो आप ऐसी जगह अप्लाई करोगे जहां पर जो ज्यादा टीचिंग ओरिएंटेड है, ना कि रिसर्च ओरिएंटेड. बट इफ यू लाइक टीचिंग एज वेल एज रिसर्च तो आप ऐसी जगह अप्लाई करोगे जहां पर टीचिंग भी और रिसर्च भी. लाइक एट आई एम अ वीएपी एट यूसीएसपी, तो मुझे टीचिंग भी करनी है और मुझे रिसर्च भी करना है. बट इसी को छोड़ करके देयर आर सर्टेन पोजीशंस व्हिच ओनली डिमांड्स टीचिंग. It does not demand doing research and all. So then you can, you know, if you like teaching, you can just go ahead and apply for those positions. So this is a plus point. PhD करने का यहाँ से you actually get to know what you want. और अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, then of course you will go to industry. um yes, and exposure है, like you get to save more. तो आप इधर उधर जाते हो, and conferences होती हैं काफी अच्छी लेवल पे, you know. So आप conferences जब attend करते हो, you see कि कितने smart लोग हैं हमारे around. You get to learn a lot from those people. You interact with them, and that helps you, you know, कि like you are basically making contacts, right? कि आपके contacts बढ़ रहे हैं उनके साथ पे. So it's a good it's a good feeling attending different big conferences as well. So US से PhD के ये सारे perks हैं. Yes. तो निखिल इज सेइंग, तो एक तो ये हो गया पीएचडी के बाद तो मुझे समझ आया कि यू कैन चूज आइदर रिसर्च और टीचिंग और बोथ और इंडस्ट्री, है ना. So there are different options as per your interest, experiences during PhD. तो Exactly. अब ये पूछ रहा है निखिल कि डू सम कंपनीज हैव एनी प्रेफरेंस फॉर पीएचडी स्टूडेंट एज कंपेयर टू बैचलर और मास्टर फॉर प्लेसमेंट पर्पस. मतलब कुछ कंपनी जो पीएचडी को प्रेफर करती हैं आई थिंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए. Yes. तुम्हारा क्या आइडिया. Honestly, मैंने अभी किसी इंडस्ट्री पे अप्लाई नहीं किया है. मैं अभी देखना चाहती हूँ हाउ डज इट वर्क, बट आई हैवंट अप्लाइड सो फार. बट यस, पीएचडीज को see, if you have like a master's position, usually people go for software engineer की जो हाँ position होती है. But if ये you have a PhD, like even master students can do that. But PhDs में data analyst position होती है. And if you have like a PhD, so they give you a chance to present your research work, which is a plus point. So ऐसी बहुत सी जगह है. And of course yes, कुछ universities ऐसा होती हैं जो मांगती हैं कि आपने पिछले 3 साल अच्छी कोडिंग करी हो या फिर आपने किसी हाँ अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया हो. सो लाइक इफ यू हैव अ पीएचडी तो फुल फ्लैश 3 साल तो आप काम करते ही हो अच्छे से रिसर्च प्रॉब्लम है. सो दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट. सो यस, पीएचडी स्पेशली अगर आपकी पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में है ना, दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट. हाँ. स्टैट्स वालों की बहुत डिमांड है. सो आई वुड से यस, पीएचडी का प्लस पॉइंट होता ही है. इफ यू आर इन स्टैटिस्टिक्स देन 100% यस. एक तो क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, बच्चे मुझसे भी कई बार पूछते हैं व्हाई डिड यू स्विच फ्रॉम मैथ्स टू स्टैट. मैं भी मैथ्स से स्टैट में स्विच किया हूँ, तुम भी ने भी. तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगा कि स्टैट में स्विच करना चाहिए, एक कर लिया. अच्छा, तो when I was at UF, I was working on theoretical stuff. हाँ But when I was in Hyderabad, I was working in, I was doing हाँ applied stuff. thing. ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट. हाँ तो मैंने जंप करा UF पे आई और and I started doing theoretical probability. So I do like I deal with a lot of equations and everything. हाँ Um, but then
I really love my research area, by the way. But the thing is कि अभी मेरे mind में question था कि इसको apply कहाँ करूँ? Like I love it. Like I love doing what I do. But how can I use it? Like, I wanted to try I wanted to build some model, do all these. I don't know. I find all these things cool, building model and all these things. So I was like, कि कैसे करा जाए एंड स्टैटिस्टिक्स वाज द आंसर लाइक अगर आपने प्रोबेबिलिटी करी हुई है तो उसके क्लोजेस्ट अगर आप जा सकते हैं दैट इज अप्लाइंग व्हाटएवर यू हैव डन in like real life is basically statistics, doing statistics. So I was like, yeah, I need to switch. And एक चीज ये होती है कि आप PhD कर लेते हो तो everything is like doable after that क्योंकि आपने 5 साल इतना काम करा हुआ है कि now you know that you will be able to survive over there, at that place. So I was like, yes, I need to switch. I still do theoretical stuff, but yes, I'm learning statistics की चीजें अच्छे से अभी because I teach all those subjects. So yeah, I'm getting good at it. So I think it was a good decision taken by me at that time. And you are getting good feedback also from students regarding your teaching. Yes, I was not expecting that, but yes, I am myself amazed actually. ओके तो इधर रह गया इसका प्रतीक्षा पूछ रही फिर से डज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैज एन एडवांटेज फॉर गेटिंग पीएचडी फॉर गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी पीएचडी या फॉर यूनिवर्सिटी या कहीं भी Depends ki करिकुलर what are एक्टिविटीज. those extracurricular activities. Like if you are doing acting, so I don't, or dancing or whatever, like I don't think it would um, serve as something, jo help karega in getting admission. But if you are like, if you are a class representative, if you know, like you know how to handle, if you're a class representative, then you listen to each and every student and then you talk to your teachers. So yeah, that might be helpful because जब भी आप जब मैं PhD मैंने करी है तो मैंने काफी चीजें करी है उसके साथ लाइक आई वाज वाइस प्रेसिडेंट फॉर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स एसोसिएशन. I was an outreach organizer for women in like American women in हाँ. mathematics. And then I have taught like I have mentored some high school students, and I have worked like I have mentored students who are like not in high school but like K-12 बोलते जो KG से हाँ. लेकर के 12th के बीच में होते हैं उनके लिए we do some fun activities. We organize classes every Sunday. So I used to participate in all those things. तो उससे ना आपको ये सारी चीजें प्लस पॉइंट होती है like if you can there is some organization in India. I'm not entirely sure कि उनका नाम क्या है, but I do know that there are some non-profitable organization, कुछ ऐसी social work जहाँ पर आप जाते हैं और underprivileged students को पढ़ाते हैं. I think Santosh would be the great person to tell you about this because I know he does a lot of हाँ. I stuff. also do NGO. I also run an NGO in village. So yes. Yeah. So working with an NGO, like great हाँ. thing, like because अगर आप उनको maths पढ़ा रही हो, you can write it in your CV, and it is amazing. Trust me, doing such things. But yes, again, like extracurricular में अगर आप ने कुछ ऐसा किया हुआ है कहीं पे, इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हाँ. like मैथ्स से रिलेटेड. सो अगर आपने वो सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, then yes. But like if you आप लिख दो एक्स्ट्रा करिकुलर में that yes I dance, yes I play this musical instrument, I do that, but I don't think that would count ज्यादा. But yes, if you know coding, that is a plus point कि आप कोड करते हैं, आप ये languages में अच्छे हैं ये. So these are the things which are good actually. तो एक तो इधर अनुज ने पूछा था कि इफ माय सीजीपीए इज लो इन ग्रेजुएशन देन विल इट इफेक्ट द सिलेक्शन प्रोसेस पीएचडी I कॉलेज don't में. think so. So my senior, he finished his undergraduation from San Xavier's College, and वहाँ पर इतने अच्छे grades नहीं देते हैं. But he was with me at University of Florida. So again, like आपका CGPA अगर अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें छुप जाएंगी अगर आपका अच्छा, like if you have a good, if you know what you want to do, like if you
really want to do probability, अगर आपने उसमें कुछ अच्छे से जर्नल पेपर्स पढ़े हैं, अच्छी बुक्स पढ़ी हैं, अच्छे प्रोफेसर्स के साथ काम किया है, अच्छे लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है, तो ये बाकी चीजें छुप जाएंगी. ऑफ कोर्स एडवांटेज होता है कि इस बच्चे के सारे अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, बट यस आई वुड नॉट से कि इंटायरली सारी चीजें इस पे बेस्ड होती है. डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड इफ यू डू नॉट हैव गुड सीजीपीए. सारी चीजें सीजीपीए पे डिपेंड नहीं करती है. यस. यस. तो इधर समृद्धि पूछ रही है, सो करियर वाइज इज इट बेटर टू परस्यू पीएचडी फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज रादर देन फ्रॉम इंडिया? आर देयर मोर प्रोस टू इट? आई वुड नॉट लाइक ऐसा कुछ कंपैरिजन हमें करना नहीं चाहिए. इट्स जस्ट कि okay, so I have met some people who have done such some amazing work और उनकी PhD इंडिया से है and they are here for their postdoc and literally बहुत amazing, like they are genius, you know. And मुझे उनके सामने honestly I met one of those guys recently. I was attending a conference and I was like, okay, great, like उन्होंने वहां से PhD करी हुई है and they know a lot more than me. But अमेरिका में क्या है कि इफ यू आर इन यूएस नो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. तो लाइक फॉर मी इट्स नॉट ऑल अबाउट स्टडीज. मेरे लिए पढ़ाई इज नॉट द इंटायर, यू नो, माय इंटायर वर्ल्ड इज डज नॉट रिवॉल्व अराउंड स्टडीज. सो इट्स गुड कि मैं यूएसए आई बिकॉज मैं वो हार्डकोर पढ़ती नहीं हूँ कि ठीक है पढ़ना ही है 24 घंटे. For me, it's like I'll study for 4 hours, I'll work for 2 hours some days, and then I would do other stuff as well. So if you want to do, you know, if you want to like live such life, then I would say that yes, USA is good because here you get to do all these things, you know. Other than that, yes, you get to know कि आपको कहाँ जाना है, because India में you don't get to teach, you don't get to mentor, so you would not know. All you would do is research and research. You would not know. Some people, they do their PhD, they get into some college, and then they realize they do not like teaching at all. In that case, then if they are so confused that if they really want to be in academia or not, you know. So I feel उस चीज के लिए भी आपको यूएस, लाइक अगर आपको बिल्कुल देखना है कि yes, I want to teach for some time and I want to see if I like it or not, तो उस चीज के लिए भी I would say कि USA is best. But India किसी से भी कम नहीं है, I would say. ठीक है, I have met some great people, like बिल्कुल जो they are brilliant and amazing, they are so studious. So I would say कि अगर आप बिल्कुल पढ़ाकू types हैं, then India, man. Yes. And of Actually, course you will be living close to your home. You can visit your home anytime. You cannot do that if you are in US. So yes. I will add one answer to it. There is a big researcher in my field, especially reliability, in Balakrishnan, जो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. वो कम्युनिकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स जो जर्नल है उसके एडिटर भी हैं. So he is PhD from IIT Kanpur, and then he is professor in McMaster University Canada. He is editor of many good journals, and he is doing work like मैं उसके पेपर पढ़ता हूँ, एक साल में 200 रिसर्च पेपर आते हैं, मतलब उनके नाम से, उनके बहुत सारे एसोसिएट्स होंगे एंड ऑल दैट. बट ही इज डूइंग वेरी वेल देन. तो वो इंडिया से पीएचडी करके, कानपुर से पीएचडी, आईआईटी कानपुर से पीएचडी करके वो इतना अच्छा कर रहे हैं. तो इट कैन बी, इट इज योर एबिलिटी एंड दैट. हाँ, यूएस में ज़्यादा जरूर एक्सपोजर है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं ज़्यादा है, बट एबिलिटीज आपकी हैं. ठीक है, चलो. तो अब ये निखिल पूछ रहे हैं, डज पीएचडी स्टाइपेंड हैव कंपलसरी टीचिंग एज अ टीए? डज पीएचडी स्टाइपेंड हैव कंपलसरी टीचिंग एज अ टीए? If yes, we can we also do other part-time work for some extra income or no? No, अगर आप टीए हो या फिर आरए हो, कुछ भी हो, and if you are like enrolled as a PhD student, then you cannot do any other part-time job. क्योंकि आपके लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा रहता है कि इतने टाइम ये काम करने वाले हैं एक वीक पे, और उसकी पेमेंट लाइक आपको मिल रही है ऑलरेडी as a TA, as a RA, whatever. So you are not, you'll not be allowed to do anything else other than that. But समर्स में, समर के टाइम पे कभी कभी लीनियंट हो जाता है ये चीजें, बिकॉज
जो यूनिवर्सिटी है वही आपसे कम काम करवा रही है. लाइक लेट्स से कि अगर वो 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो, ये आपके लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है. तो फॉल सेमेस्टर एंड स्प्रिंग सेमेस्टर तो आप 20 आवर्स वीक आप करते ही हो. बट समर में कभी कभी क्या होता है ना, 15 आवर्स पर वीक का आप काम कर रहे होते हो. लाइक इफ यू हैव टू चेक दिस इन योर लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो अगर आप 15 आवर्स पर वीक कर रहे हो, तो वो जो बाकी का 5 आवर्स पर वीक है, यू कैन वर्क एट यू कैन वर्क इन सम, लाइक बहुत सारी जगह यहाँ पर स्टारबक्स में काम करते हैं बच्चे जो भी आते हैं. एंड दे वर्क इन पांडा एक्सप्रेस, ऑल दीज रेस्टोरेंट, लाइक यू कैन वर्क देयर. और लाइक कुछ इंटर्नशिप होती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, आप वहां पर काम कर सकते हैं. बट समर में ये चीजें थोड़ी डिफर करती है. बट स्प्रिंग और फॉल सेमेस्टर में यू विल नॉट बी अलाउड टू डू एनीथिंग एल्स. एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप आए हैं तो आप ऐसी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करें भी ना. बिकॉज you should, if you're living here, तो make sure कि आप कुछ भी ऐसे उल्टे तरीके ना करें. Just do what you are supposed to do, that's it. Yeah. ओके, सो यू आंसर्ड वेल. एक क्वेश्चन और जो पहले भी आया था उसी कंटिन्यूएशन में, वो एसओपी से रिलेटेड. इन्होंने कहा कि आई मींट दैट आई एम फ्रॉम आईसीएसई स्कूल एंड वी वर टॉट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्सटेंसिवली फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन, आई थिंक इन स्कूल्स. So the question being, is this level of SOP acceptable by universities in US, or is the school level too fundamental for the foreign universities? Okay, first of all, I have no clue कि वो किस लेवल पे उन्होंने बताया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. बट आई एम गेसिंग कि अगर उन्होंने ऐसे बताया है कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट एसओपी, सो आई एम गेसिंग कि वो सही ही होना चाहिए. बिकॉज ऐसे कुछ गलत तरीके से आई डोंट थिंक कोई भी इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को ऐसे गलत तरीके से कुछ मेंटर करेगा. बट दैट बीइंग सेड, आई विल जस्ट पॉइंट आउट कि कुछ ऐसे करते कि स्टार्टिंग के पैराग्राफ में, लाइक इट हैज टू यू, आपको 3-4 पैराग्राफ्स ऐसे बनाने होंगे. एंड फर्स्ट पैराग्राफ यू राइट अबाउट योर, like you write why did you start doing mathematics, like what was that one thing कि आप maths ही करने में you were like okay no I will do mathematics. So first paragraph has to be that. Second paragraph would be everything about your bachelor's, and like if you got some sort of award, if you know, like in Santosh's case he used to teach, so like that would come in second paragraph. And like and your like bachelor's K points and what were the subjects you took. And like if you, let's say you are interested in topological data analysis, then topology was the subject you took. And topology में भी बहुत सारी चीजें, algebraic topology, this and that, so you can mention that. Third paragraph would be your masters, that in your masters you again like आपने ये subjects तो पढ़े, but now in masters you will have to write कि आपने like कैसे you started, like you know, how did you get a better understanding of that subject in masters. So you did project, you worked with some advisor, like you know, with some professor. And I remember कि when I was doing my masters, तो मेरे जो advisor थे उनके one of his colleague was working in an industry. तो उन्होंने like he proposed this idea to my master's advisor कि कैसा रहेगा कि अगर like me and my friend we work with that professor for those 2 months. I don't know why, but मैंने और मेरी friend ने मना कर दिया था उस time पे. We should not have said no at all क्योंकि ये सारी चीजें ना अच्छी होती है, like it reflects good on your CV. So I would say कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, so go for that. So your third paragraph में ऐसा प्रूफ आना चाहिए कि आप ने ऐसा क्या हुआ कि आपने कितनी डीपली पढ़ाई करी, कौन से रिसर्च पेपर पढ़े, किस रिसर्च पेपर ने आपको लाइक कोई कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ के आपको ऐसा लगे कि नो आई रियली वांट टू डू इट. You have to mention everything in third paragraph. And then the fourth paragraph is, okay, I'm applying to, like in my case, I was like, I'm applying to University of Florida. Because यहाँ का probability group अच्छा है. And then you write the name of the professor कि I would particularly like to work, like in my case my advisor name is Dr. Arnav Marsikliti. So I was like, I want to work with this professor
this professor. Now it could be 2 professors as well, name of 2, name of 3, but I would not say कि सारों का नाम लिख दो, because then you're not doing anything, but उनके बस वो कर रहे हो. But because अगर आप ऐसे 1-2 का नाम लिखते हो तो जो कमेटी सेलेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स को, दे आर लाइक ओके, इस बच्चे ने एक्चुअली रिसर्च करी है, दे एक्चुअली नो, you know. So you write in this in 4th paragraph कि you want to work with this professor, and क्यों, क्योंकि तुमने उनकी वेबसाइट देखी और उसमें से आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे लगे उनके रिसर्च में से, आपका रिसर्च इंटरेस्ट उनका रिसर्च इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पर मतलब what would you say, like ये मिल रहा है, like ये collide हो रहा है, something like that. You have to frame it up, and yeah, you have to mention all these things, and yeah, यही है classic तरीका, that if you get admission you will make sure कि आप अच्छे से perform करो. So classic SOP ऐसा ही होता है, like 4 paragraphs, of course किसी के 5 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, but when I was writing my SOP, my master's advisor, he told me that this is how it should look like 4 paragraphs, how you started, bachelor's, master's, and then why do you want to go to that university, who do you want to work with, and why. That's it. So we have answered all queries of aspirants, and I also get to learn many things. So thank you, Puja, for your time, and thank you everyone for joining. Thank you so much. Yeah, thank you, and bye. And we are proud on you. You are doing well. अच्छा लगता है ना, हमारे साथ के लोग इतना अच्छा करते हैं लाइफ में, तो एटलीस्ट लगता है कि चलो, मतलब अच्छा फील होता है ना. इट्स गुड. Yeah, exactly. So we have some advisor that we can take help of, like that, है ना. या ये भी है. Why not? So okay, thank you so much. Bye. Okay, thank you so much for inviting me. Yeah. Bye-bye. I hope Bye. it was helpful. Yeah, it was very helpful. So people will thank me a lot for Thank this. you so much. Thank you.